Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of Daily News Analysis. So कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. And before we start, let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visible to everyone? Okay. So dear friend, this is very important to discuss about the newspaper analysis. Make sure if you are new in the channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentor. Dear friend, this is very important to understand the importance of the Hindu and Indian Express. As you know that कि there are two prominent newspaper जहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे questions आते हैं. So daily news analysis का purpose ये है कि you must keep an eye on that कि what is happening around us and that makes you very aware citizen of this country. So daily news analysis में what exactly you need to do, that we have lots of things to discuss, like we discuss about national news, we discuss about international news, we discuss about sports based news, but apart from that we also discuss about the Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in daily news analysis. और उसके साथ क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि मैं आपको यूट्यूब के लास्ट में पूछूंगा कि 5 क्वेश्चंस. उसका पर्पस ये है कि आर यू फैमिलियर विद दैट कंटेंट और नॉट. मतलब वो जो 5 क्वेश्चंस होंगे उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके. So now quick tips with the help of mnemonics we'll learn lots of things. Here is the very first article which talks about Srinagar gets tag of World Craft City, 4th from country. Recently, Srinagar has become the 4th Indian city to recognize as a World Craft City. That is World Craft City. और ये जो World Craft City है इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी दैट इज़ डेजिग्नेटेड बाय द यूनेस्को. UNESCO. बिल्कुल सही सुना आपने. यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो यूनेस्को उसकी में आता है आपका CUCCN एंड UCCN का मतलब हो गया विच मीन्स दैट यूनाइटेड नेशंस क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूनाइटेड क्रिएटिव सिटी नेटवर्क. सो यहाँ पे जयपुर, मल्लपुरम एंड मैसूर आर ऑल्सो अदर इंडियन सिटीज़ दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़. सो एज ऑफ नाउ at least 10 different forms of craftsmanship survive in Srinagar and its suburbs, including papier mache, walnut, wood carving carpet, and Sozni embroidery, and Pashima and Kani shawl. ये सारे जो हैं उसे यूनेस्को ने क्राफ्ट सिटी में कंसीडर करा है श्रीनगर को. ठीक है जी, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल वेयर वी डिस्कस अबाउट लॉ अगेंस्ट चीटिंग. रिसेंटली आपने देखा होगा UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए. उसके बाद नीट के एग्ज़ाम जो थे दैट वाज जो नीट का एग्ज़ाम था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट वो भी आपका कैंसिल हो गया. सो दैट रूल्स अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन prevention of unfair means act have been notified. As government struggles to contain the fallout of exam cancellation, how can the law help in the future? So सेंटर ने मंडे को नोटिफाई किया about rules required to operationalize the public examination prevention of unfair means act 2024. इस एक्ट को लाने की बात हो रही है और इसके अकॉर्डिंग द लॉ इटसेल्फ केम इनटू फोर्स ऑन June 21st आफ्टर इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. सो रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड pensions provide a framework of action to prevent the use of unfair means in the public examination, including appointing center coordination, venue in charge, and
regional officers. So the government is under great pressure from the opposition and protesting students across the country after being forced to postpone the UGC NET, उसके बाद फिर CSIR, फिर उसके बाद UGC NET के एग्ज़ाम, फिर NEET के एग्ज़ाम, NEET PG competitive exam. So the CBI is investigating the NEET UG exams after investigations in Bihar found evidence of a paper leak. ये रूल क्या कहता है? Central government national recruitment agency that shall prepare the norms, standards and guidelines for the CBT in consultation with selections once finalize these norms will be used, and the notified norms, that is standards and guidelines, that shall cover both physical and digital infrastructure and activities including the standardization operating procedures. इसमें एक दूसरा काम क्या होगा, एक सेंटर कोऑर्डिनेटर होगा. And what is the work of the center coordinator? The rules provide for the appointment of a center coordinator of the public examination who may be serving or retired employee of the central government, state government, public sector undertaking, public sector banks, government and universities, autonomous bodies and other government organization. अब इसका मतलब क्या है यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स का, पहले इसे समझो. देखो, what is the meaning of use of unfair means? What constitutes the use of unfair means for the purpose of the act? Section 3, ये जो आपका Section 3 है. Section 3 of the act lists 15 action that amount to using unfair means in public examination for monetary or wrong gain. The action include leakage of question paper or answer key or a part thereof, and colluding in such leakage, accessing of the taking position of the question paper, optical mark OMR जो आपका होता है, OMR मतलब optical mark recognition, optical mark recognition OMR, response sheet with authority, and that tampering with answer sheets including response sheet providing solution to one or more questions by any unauthorized persons during a public examination and directly or indirectly assisting the candidate in a public examination. So what are the rationale for the law? The ongoing controversy over alleged paper leaks that would appear to provide an obvious justification for such an act, and future incidents for the use of unfair means in examination will be prosecuted under the provided provision of the law. So इस law से new law which provides for fines of rupees 1 crore and up to 10 years in prison is also expected to serve a model draft for state to adopt their discretion. So ये सारी चीज़ें जो है इसमें की गई. मेरे डियर फ्रेंड, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में. सोचो किसी बच्चे की पूरे साल की मेहनत है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो CUT की बात करें, CLAT की बात करें, UGC NET की बात करें, CSIR की बात करें और नीट की बात करें, JEE की बात करें, where the major chunks of students are preparing for the exam, so that government are taking these kind of action which is very very important to understand. ठीक है, चलो जी. नेक्स्ट वन है करंट अकाउंट लॉक्स $5.7 बिलियन सरप्लस इन Q4 of 10 quarters. इंडिया का भी करंट अकाउंट रिकॉर्ड सरप्लस backed by narrowing a trade deficit of 50.9 billion. So India current account balance records surplus of $5.7 billion in Q4 financial year 2024 against a deficit of $1.3 billion and 0.2% GDP a year ago. So the merchandise trade deficit of $5.9. So ये है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसमें यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दैट मॉडरेटेड टू $23.2 बिलियन के अराउंड है, राइट. सो हाई सर्विस रिसीट जो है, नेट सर्विस रिसीट जो है वो अराउंड $42.7 है. तो
तो आरबीआई के बारे में थोड़ी बहुत आप फैक्ट्स पता कर लो कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ, राइट। ये 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ। एंड देन वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई, दैट वाज इन मुंबई। अर्लियर 1935 में एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कोलकाता वाज द हेडक्वार्टर्स, और 1937 में क्या हो गया, मुंबई। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार। बेसिकली ये है क्या नीति आयोग? नीति विच मीन्स इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो इसमें नीति आयोग ने इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ने अभी रिसेंट आर्टिकल में डिस्कस करा कि कैसे कैसे इस नीति आयोग के प्रोजेक्ट में ग्रेट निकोबार में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उससे कंट्री को क्या क्या चीज़ें फ़ायदा होंगी, और इस प्रोजेक्ट में कितने करोड़, अराउंड 72,000 करोड़ रुपीज़ में खर्च किए गए हैं, राइट। मार्च 2023 में नीति आयोग ने इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया था, ऑब्वियस उसके आउटकम अभी भी आने हैं। हाउ द पीसा हैज़ बूस्टेड। पीसा का मतलब क्या होता है? पीसा क्या मतलब है इसका? देखो, पीसा का मतलब होता है विच इज़ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज that empower the scheduled tribes as political actor and as they needed to protect trees for their livelihood. It made from hostile to commercial timber and mining. So इसमें बेसिकली पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट में ये मेंशन किया गया है, जो इसमें जो चेयरपर्सन एंड ऑल इन्होंने ये डिस्कस करा कि इसमें जो है पीसा एक्ट में क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। एंड द पॉलिसी दैट अप्रोच टू conservation in India has been grappled with two kinds of conflicts: conservation versus resources. So one is conservation and second we can say that is resources. इसके ऊपर तो इन शॉर्ट ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, सॉरी ये जो एक्ट है इससे क्या क्या बूस्टअप होने की बात है, इसमें SC और ST एक्ट के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। सो ये इसमें रिप्रेजेंटेशन और ट्रैकिंग होनी चाहिए कि उसमें कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। हाउ डू द ऑथर अराइव एट द कंक्लूजन दैट थ्रू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था 1992 में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, तो 1992 में जब पास हुआ था उस टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो गई थी। उसमें पीसा को बाद में फिर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, दैट इज़ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। सो दिस इज़ not a case of correlation, but it's important that government should need to be rectify it. Where does India stands with respect to G7 group of 7 countries? Recently Italy में host हुआ. What was on the agenda on the recent group of 7 meet in Italy? How many times has India been invited? And as a key player in the global south, is its voice heard? Yes, India has been invited in the outreach 11 times, with Prime Minister Narendra Modi attending for the 5th time. What were the G7 hoping to achieve? India has been an important part of the G7 process, और वो भी आज से नहीं बहुत सालों से, that coming to a grouping attention to the 2000 for steady growth figure during the global financial collapse. India is not only a key member of the Global South and has hosted the Voice of Global South conference since 2023. It is an important platform for India. For India, the outreach session of the G7 meeting that follows a day after the main G7 deliberation that has always been an important platform to showcase its achievements and outlook to the world. What is the future of G7? So the G7 is increasingly under the attack for being an elitist, non-inclusive group that does not include 3 of the world's top economies, China, India and Brazil. So in addition that G7, which has not increased in the membership, in fact it decreased it by the dropping Russia, और Russia इसमें से drop हो गया in 2014. So Russia was a part of G7, but now Russia is not a part of 2014 में
रशिया जो है वो बाहर हो गया G7 से। तो सो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो G7 that has been unable to change the course of Russia invasion of Ukraine or to stop Israel devastating bombarding on Gaza or to deter China from its inroads with global connectivity and infrastructure and economic influence that is raising more questions about its relevance. Now PTSD trauma basically क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें कि एंग्जाइटी, फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स, इमोशनल अब्यूज़ और इन सारी चीज़ों के बारे में दी हुई होती है। तो बेसिकली इसको अराउंड 4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट हैज़ सफर्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर and at some point according to the World Health Organization, and PTSD is often associated with the war veterans, survivors or sexual violence, and typically anybody who has lived through a life threatening situation. Now SAARC कंट्री को लर्न कैसे करें? डियर फ्रेंड, इसको लर्न करने के लिए आपके सामने सिंपल सा है कि आप उसे लर्न कर सकते हैं लाइक विद द हेल्प ऑफ लाइक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बेसिकली नोट्स बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सार्क को इस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। सार्क को फाउंड किया इन ढाका में। सार्क का हेड क्वार्टर्स है काठमांडू। टोटल मेंबर्स हैं 8 और ये मेंबर्स हैं उनके। नाउ क्वेश्चन अब तैयार हैं आप सारे? जी हाँ। सबसे पहले एनटीए के ऊपर बहुत सवाल हो रहे थे। एनटीए क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। So NTA is an autonomous organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. The NTA conducts entrance examination for admissions to all higher education institutions in India. आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। So dear friend, NET National Eligibility Test and NEET National Eligibility Cum Entrance Test controversy highlights systematic failures, and we can see is a poor policy implementation over the years. Recurrent paper leaves, exam cancellation, incorrect results, and unexplained grace marks that have eroded trust in National Testing Agency. So NTA basically एक autonomous organization है that registered under the Indian Society Registration Act of 1860. It conducts entrance examination for admissions into higher educational, higher education institution, not all in India. So NTA is chaired by an eminent educationalist appointed by Ministry of Human Resource and Development. So which of the following countries not a member of G7? Russia जो है it was out in 2014 में Russia was out. Now Italy ने अभी इस साल होस्ट किया. Germany also member, Canada is also member. So in short we can say that is not a member of G7 group. So Russia is not a member of G7. So Group of 7 founded in 1975, formerly called Library Group. Group of 6, Group of 8, Reversion, in an intergovernmental organization made up 7 of the world's largest advanced economy. It includes Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. जुगांतर एंड भारत माता एसोसिएशन रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स है. The first half of 20th century revolutionary groups sprang up mainly in Bengal, Maharashtra, Punjab and Madras. So the revolutionary were not satisfied with the methods of both the moderates and extremists. Hence they started many revolutionary secret organization. Servants of India Society के बारे में, ये फर्स्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था? नहीं जी, इस फर्स्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री की नहीं थी. ठीक है. The society was not concerned with promotion of Swadeshi and achievements of political Swaraj. हितवादा in all major regions. Basically इसका आंसर फर्स्ट तो नहीं है. So obvious इसका आंसर है ऑप्शन डी. The Servants of India Society को establish किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने. In 1905 में the society organized many campaigns to promote education, sanitation, healthcare and fight to social evils of untouchability, discrimination, alcoholism, poverty, oppression of women and domestic abuse. Statement third ये कहता है the publication of the Hitvada, the organ of society in English from Nagpur commenced in 1911 में हुआ था ये. Now we is the last questions is today. This one is, where is the headquarters of Indian Ocean Rim Association? We have 4 options is here.
South Korea, South Africa, Mauritius, Indonesia. Headquarters of Indian Ocean Rim Association, South Korea, South Africa, Mauritius and Indonesia. So the right answer is here is Mauritius is the right answer. सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस का पर्पस ये होता है कि आप इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं. सो जनरली द क्वेश्चंस इज़ फ्रॉम द डिफरेंट फॉर्मेट and in short we can say the purpose to ask the questions is something is very different because if you are able to solve the questions it means that you are very familiar with the newspaper content and all. So dear friend, this is all about the session and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions about this session, please let us know in the comment section, and if you are new to this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. So dear friend, this is all about the session and I hope that you enjoyed the session a lot, and if you have any questions please let us know and please share this beautiful session to your friends and family. Thank you so much guys, and we'll meet you in the next session. Till then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें. मिलते हैं फिर next YouTube session on Pratham Test Prep official YouTube channel. Bye bye and take care once again.